So, hello friends, how are you? So, myself Virendra Kumar, and you are watching Hirak Cosmos. In this lecture, we are going to continue the properties of solids, under which we have talked about the elastic and plastic properties of the solids, various stress, strain, like you know, first longitudinal stress, longitudinal strain, shearing stress, shearing strain, and third one is the hydraulic stress and hydraulic strain, right? And also we talked about the Hooke's law and the material that obeys the Hooke's law, and the material that doesn't follow the Hooke's law is called non-Hookean material, right? So let's brief the Hooke's law. As per Hooke, Robert Hooke, that law that he gave a law that is related to the elasticity of the solid, and that is known as the Hooke's law. Stress is directly proportional to the strain. If you are applying the stress on the solid, then the produced strain will follow the stress. As much stress is being applied on the solid, strain is accordingly produced, right? And such type of relations are called the linear relation. So the material that obeys the Hooke's law uh, is called the Hooke's material, and that doesn't follow the Hooke's law is called the non-Hookean material. So Hooke's law, stress is directly proportional to strain, and we get the linear relationship. Linear relationship between stress and strain. And for that, the there is a curve we have discussed yesterday, and because of some technical issue, our video stopped, and I did not notice. I continue for the 1.5 hour, but you get only the half hour. So that was blunder yesterday. So this is the stress versus strain linearity graph, right? But the material that doesn't follow the Hooke's law shows non-linearity. That means if we draw the graph between stress and strain for non-linearity, the material will be the graph will be for non-linear relationship or non-Hookean materials. Non-Hookean materials. See, the material is called non-Hookean material or solid, right? So in this case, curve may be like this, that is curved, not the straight line. Graph will be obtained for the non-Hookean material, right?
So what are those materials? So what are those materials we'll discuss? So this is the yesterday's class. Now fresh slide is here. So the material is known as elastomer. Elastomers. First one. Polymer. Polymers. Plastics. Note it. Plastics and some tissue, some biological tissue. Tissues of living beings. Living being. And your textbook, NCERT textbook, there is an example of aorta tissue. Aorta tissue. So we will discuss this all. So elastomers are those materials that doesn't follow the Hooke's law. That means if we plot the graph between the stress and strain for these elastomers, polymers, plastics, and biological tissue, we'll get the non-linear relationship, right? So elastomers are like rubbers. You know, you can stretch the rubber multiple times of its original length or its original dimension. It is well known, and we used to say that the rubber is so elastic. It is not so elastic, it is elastic because so elastic means that body is really highly elastic. So extension doesn't mean that body is so elastic, right? Because for the small stress there is a large strain developed in the rubber. That means it doesn't show the linear relationship between the stress and strain, right? For small stress, you can stretch for a appreciable value of the length in comparison to the original length. Similarly, polymers and plastics doesn't show the linear relationship. Means they don't obey the Hooke's law. Now come to the aorta case. In your textbook, there is a graph. I will discuss this. See, this is the stress strain. This is the stress strain curve for the elastic tissue of aorta. So, what is aorta? So, aorta is the artery in our heart system that that takes away the blood from heart to the other parts of the body, and it is large artery. It is the, you can say that the largest artery is in thickness, in radius. So you can imagine that our heart pumps blood rhythmically, and it pumps really very hard. And if the aorta that has the beautiful property of elasticity that doesn't follow the Hooke's law, it saves us from the jerkian flow of the blood. That means this property of iota that doesn't follow the Hooke's law make the blood flow smooth. I will discuss this further. See, iota.
aorta, there is a artery that is known as aorta, and here is a our heart system. This is heart, and some the blood is going outside. So this is heart. This aorta is made up of elastin fiber and collagen. Biology student have the good knowledge of these terms. Collagen, right? So elastin and collagen. Collagen provides the strength. It provides the strength to the arteries. This artery, aorta is artery. Aorta is an artery, right? It is an artery. So see, so collagen provides the strength and elastin fiber provides the elasticity. Elasticity. And these two things, at least, there are other things also. Layer of some typical tissues, better biology. So, but these two combining play a great role in providing the extraordinary property to the aorta. And what is that extraordinary property? See, when the pumps, heart pump means heart pump means heart get contracted. Heart gets contracted. Heartbeat means see heartbeats. Heartbeats means heart contraction that is known as systole. When heart beats, then it contracts. What it contracts, and it contracts means it heart gets squeezed. एकदम से क्या होता है सिकुड़ जाता है उसके बाद क्या होगा द ब्लड विल गो आउटसाइड थ्रू दिस aorta and the pump is so hard that this aorta get stretched in a very good way, get stretched, and during this stretch, see, when it gets stretched, it stored elastic energy. What? Aorta. After getting stretched, that means during the systole, when heart contracts, systole phenomena happens. Systole phenomena happens. भाई आप देखते हैं ना बीपी में आपका जो है 80 और 120 रहता है सिस्टोल डायस्टोल तो आपका जो है 120 क्या है सिस्टोल डायस्टोल 80 तो आप समझिए जब कंट्रैक्ट होगा तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है जब ज्यादा होगा तो आपको जो आपका ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है हाँ वो तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि पंप कर रहा है ना तो पंप प्रेशर ही तो क्रिएट करता है पंप प्रेशर क्रिएट करेगा और जो आयोटा है उसका टिश्यू क्या होगा स्ट्रेच्ड होगा स्ट्रेच्ड हो जाएगा और ब्लड को कंटेन करेगा ड्यूरिंग स्ट्रेच इट व्हाट इट डज दैट स्टोर द इलास्टिक एनर्जी राइट एंड देयर आफ्टर देर इज ए रिलैक्सेशन इन द हार्ट जैसे ही कंट्रैक्ट और फिर रिलैक्स भी तो होगा सो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट sorry relaxation of heart that means diastole आप एक बार ये समझिए जब कंट्रैक्ट हुआ तो आयोटा स्ट्रेच हुआ और उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड हो गई ठीक है
उसके बाद तुरंत ही क्या होगा, हार्ट जो है फिर रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा फॉर द नेक्स्ट बीट। जैसे ही रिलैक्स होगा, so this aorta will get enough time to release its energy. What energy? Elastic energy to make the blood flow. And during relaxation, it make possible the blood flow smoothly. जब रिलैक्स हो रहा है तो कोई पंप नहीं हो रहा है, तो उस समय तो ब्लड मिलेगा नहीं बॉडी को, तो क्या करता है, वही स्ट्रेच हुआ एनर्जी जो होती है उस ब्लड को, जैसे ही ब्लड हार्ट कंट्रैक्ट होगा, आयोटा एक्सपेंड होगा, और वो जो है एनर्जी स्टोर किए रहेगा अपने अंदर, स्ट्रेस एनर्जी दैट इज इलास्टिक एनर्जी। और ब्लड को जैसे ही उसके बाद रिलैक्स होगा, ब्लड को धीरे धीरे उस रिलैक्सेशन पीरियड में कंटिन्यूअसली ब्लड को सप्लाई देता रहेगा, बॉडी को सप्लाई देता रहे ब्लड, मतलब स्मूथ फ्लो करने में क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। दैट इलास्टिक एनर्जी हेल्प्स इन blood flow to body parts smoothly। आप समझ रहे हैं? अदरवाइज ये सिस्टम ना होता आयोटा के अंदर, तो सडन जर्क होता, एकदम से हाई प्रेशर से ब्लड जाता, और फिर जब रिलैक्सेशन होता तो ब्लड ही नहीं जाता। तो एक मतलब एक ब्रेक कर कर के ब्लड जाता। लेकिन जो इस आयोटा के अंदर जो ये इलास्टिन फाइबर एंड कोलाजन है, दोनों मिल करके एक कंपाउंड जो है सिस्टम बनाते हैं, और दोनों जो है मिलके एक साथ काम करते हैं, और ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर है, लिविंग बीइंग के अंदर है जो है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा आपने फिजिक्स और बायोलॉजी एक साथ समझ लिया होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, दिस ग्राफ। Here it is mentioned that what? See, very good point is here that in the note that although elastic region is very large, in this there is elastic region is very large. Means that aorta shows the enough elastic region. That means you can see that up to this point, iota has the capability to regain its original dimension, right? Even after this much stress, 1 into 10 to the power 1 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई होने के बाद भी जो है आयोटा के पास जैसे ही वो प्रेशर हटता है वापस आ जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक रीजन इज गुड, देर इज नो प्लास्टिक रीजन visible in this graph। That means iota really has a beautiful property that saves us। So you can see there is no well defined plastic region, मतलब आयोटा का जो टिश्यू है वो प्लास्टिक रीजन में जाता ही नहीं है, जो हमारा ग्राफ है उसके हिसाब से नहीं जाता है। अब चला जाएगा तो फिर उसको ब्लड को कंट्रैक्शन एक्सपेंशन कैसे होता, आप समझ सकते हैं कि ऐसा होता तो है नहीं, इसका मतलब जाता ही नहीं है ना प्लास्टिक रीजन में। फॉर द प्रेशर डेवलप्ड बाय द हार्ट बीट, जितना भी हार्ट बीट का प्रेशर है आप लोग जानते हैं, कभी कभी 200 तक चला जाता है, फिर भी जो है वो अ, बचा कर रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा होने से वो तो क्या होगा, हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, इस ग्राफ को समझा कि जो है दिस इज द स्पेशल ग्राफ फॉर द आयोर्टा, एंड इट शोज दैट enough enough elastic region but no plastic region for the aorta biological tissue। Here you can see for one stress there is a one strain, means if this is the aorta tube, and by pumping of heart it can
expand to the double of its volume or radius, and even then it has the capability to regain its what original dimension. How it is showing that stress for stress is equal to 1 into 10 to the power 6 Newton per meter square. There is a strain 1.0 strain. So what does it mean? Strain one means strain is defined as delta L upon L, and that is the one. This means delta L becomes L. यदि एक्सटेंशन जो है ओरिजिनल लेंथ के बराबर भी हो जाए तो भी जो है आयोटा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो है वापस आ जाए, रिगेन कर ले इसकी साइज। बस इतना ही इस ग्राफ में। नाउ विल मूव फर्दर, विल डिफाइन द पार्ट मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुली एक ही बात है। इलास्टिक मॉडुली elastic moduli means plural of modulus. So modulus of elasticity, so there are three types of moduli. First one is the Young's modulus. Second one is the modulus of rigidity. And third one is the bulk modulus. These are three moduli: Young's modulus, modulus of rigidity, or shearing modulus, bulk modulus. And these modulus are defined. We'll discuss one by one. Young's modulus. Young's modulus. So Young's modulus denoted by symbol sig y, right? Y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. So see here we are taking the tensile stress, and this is true for the compressional stress also. For the same tensile or compressional stress, there is a similar strain. So it doesn't matter whether you are taking the tensile stress or compressional stress. For both, there is a same result for the strain, right? So stress is sigma, and longitudinal stress is epsilon. So this is not E, this is epsilon. Epsilon, we write this as epsilon. This is the Latin letter. This is epsilon. So Young's modulus is defined as the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain. So any modulus is defined as the what? Ratio of the stress to the strain.
But when we take the particular stress, then we'll get the particular modulus. So when we get take the longitudinal stress and longitudinal strain, we get the Young's modulus. And let us discuss further the Young's modulus. So in case of longitudinal stress, it is F by A, and longitudinal strain, that is delta L upon L, that can be further written as F into L upon A into delta L. Right? This is the Y. You notice here, you remember this relation, that is very important because it numerical used to come based on this formula. So this formula is very important. You must remember this. How? So we get y is equal to F into L upon A into delta L, where A is the area of cross section, area of क्रॉस सेक्शन, जिस पर वो फोर्स लग रहा है वही ए है, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ, एंड डेल्टा इज द इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट कह सकते हैं, इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ. These are the symbols used. Now, what is the dimension of y? So, unit of Young's modulus is, the strain has no unit, no dimension. So, whatever the unit of y will be is equal to the dimension unit or dimension of the stress. That is the Newton per meter square. Newton per meter square or Pascal, right? And dimension of y. In the exam it is used to ask for matching purposes, or for the what is the dimension of the Young's modulus in from the given options. Four options will be given and you have to choose. So how you can calculate and how you remember, both are here. So dimension you can calculate by this Newton per meter square. Newton is equal to ml t minus 2, and meter square, that is L square. So in this way you can calculate. So that is the ml minus 1 t minus 2, and you can remember this. So dimension of y, that is Young's modulus, is this one, and this dimension is true for the modulus of rigidity and bulk modulus both. Why? Because the modulus is itself defined by the ratio of the stress and strain has no dimension, no unit. So what is left? Left is the unit of the stress or dimension of the stress. So in all three cases, the unit and dimension will be the same. But one thing here, I will make you that it can be written in another term also. See, if I write this here, F into L may be written as the joule in terms of unit, joule, and area meter square into meter, that is meter per cube. So this is another unit for the Young's modulus, right? This is another unit for the Young's modulus. So that is tricky. You must notice here F into L, that is the joule, and area into length, meter cube. So means Young's modulus unit can again written as the joule per meter cube. Now let us see some data from the NCERT textbook. It is written here, it is given in your text NCERT textbook that this is the table 9.1,
and it is very important. You know, in the competitive exams, examiner used to ask from the tables, from the some data. So each and every point of this NCRT used to be studied thoroughly. So you should not leave anything without going through. So see, we are going to discuss this. For it is noticed that for metals, Young's modulus are large. For metal, Young's modulus are large, and if modulus is large, that means that metal is of good strength, is having the good elasticity. So why we are measuring these parameters, Young's modulus, modulus of rigidity, and bulk modulus? Because by measuring these, we can judge the solids properties, whether it is elastic or not, and if it is elastic, how much. We can compare the metals, different metals, different solids by measuring these properties, right? So here it is written. So there, these materials require a large force to produce a small change in length. So if Young's modulus is large for the metal, that means if you want to produce a small strain for that material, then you have to apply the good stress because its modulus is large. Large means it requires the good stress for producing a small strain. That means it is not easy to deform the metals. It requires good effort, right? So how much the effort what metals require is given here. To increase the length of a thin steel wire of zero point 0.1 centimeter square cross sectional area. See, if we are taking the steel, another is the aluminum, aluminum, brass, and last one is the copper. So the length, sorry, yeah, steel wire of cross sectional area for this wire, material wire, is 1.1 centimeter square. If we consider that wire is made up of different materials having the same dimension, zero point 0.1 cross sectional area, right? So if you want to produce the produce the length, change in length 0.1%, 0.1% for each case. So what, this is the solid type material, metal type, and the this is the what, force required, force required for producing the same length for different material. So for the steel, this is the, for steel this is a 2000 Newton. For aluminum, see, aluminum, brass, and copper, 690. For aluminum, 690. For brass, this is 900 Newton, and for copper, this is 1100 Newton. So by observing this data, you can judge, you can analyze. So which metal is good, more elastic, and which one is the less elastic? How? For the steel, it requires 2000 Newton. For the aluminum, it requires 690 Newton, 900 Newton for the brass, and 1100 Newton for the copper for producing the same strain for the same type of dimension of different metal.
So definitely you can see that which elastic behavior sequence, how which one is steel is highly elastic than the copper, and copper is highly elastic than the brass, and brass is highly elastic than aluminum. So you can see the sequence, and you should remember this data. This is very important. You said you should remember because it may be asked for the NEET as well as for the ITG. Right. Again, if we observe this table, so the table's title is Young's moduli and yields strength. So before going into this, let's discuss the relationship. Sorry, one thing I left you for discussion. So that is the this. Before this going into detail, we can't understand that table. So let's discuss. Stress strain curve explanation. How much time we are left with? Okay, we have time. Stress strain curve explanation. Stress strain curve explanation. What is this stress strain curve? So for a typical metal, for any metal, if you want, you want to do experiment. So that is the typical metal for you. So for any typical metal, if you want to draw the relationship between the stress and strain, it shows the graph, typical graph. So let's draw this graph, and you can also draw, right? So this is the x-axis and this is the y-axis, right? And this is the origin. So you can see this is the straight line. This is the straight line for, if I put some letter, this is A. Up to this point A, the graph shows the linearity relationship. Linearity, right? That means OA, this is stress. You can mention here. This is stress. This is strain. This is stress and this is strain. So OA region, OA to A shows the linearity relationship. That means the metal obeys the Hooke's law. That means from O to A situation, the metal exhibits the elastic properties, right? It is sure, right? Up to A, it shows the elastic property, and after applying the stress, after applying the stress, and it shows the strain up to this point. And when we remove this stress, the metal, the solid
comes into its original dimension, right? That is the, and this is the known as the what? See, proportional limit. So this point A is called proportional limit. Why it is called proportional limit? Because proportional limit. Why we call it proportional limit? Because up to A, the Hooke's law is being followed. Hooke's law ओबे हो रहा है. Hooke's law is obeyed up to A. That's why the end point A is called the proportional limit. After this, there is no proportionality. There is no proportionality. Non-linearity comes into play. What? How? See, the graph becomes like this. The graph becomes like this. It takes the curve shape. As we apply the further stress beyond A, as we apply the stress beyond A, the curve comes, the graph comes as a curve. It takes the non-linearity. That means relationship becomes the non-linear. That means here, see, if it is B, the metal doesn't obey the Ohm's, or doesn't obey the Hooke's law. Doesn't obey the Hooke's law. So this is the non-linearity, non-linear. यहाँ से नॉन लीनियर स्टार्ट हो गया. ये नहीं कि यही है, इसके आगे भी होगा. नाउ इफ अगेन वी सी, इफ वी अगेन increase the stress, then we get the this position D and this E. So we'll discuss what is D and what is E. Certainly this is B and this is A, So, when we increase the stress after the metal comes at the point A, we get the point B, and up to this point B, even metal has the capability to comes into the original dimension after the stress is released, weight is released, load is removed, right? The लोड रिमूव होने के बाद मेटल का बी पॉइंट तक इतना स्ट्रेंथ है कि वो जो है ओरिजिनल क्या होगा, शेप में, डायमेंशन में आ सकता है. तो एंड दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड द व्हाट? बी इज कॉल्ड द yield point. B is called the yield point. Yield point. B is called yield point, and corresponding value for stress is called the yield strength. Yield strength. Corresponding stress is known as yield strength. इसका क्या मतलब है? yield strength और yield point का क्या मतलब है? मतलब पॉइंट बी तक जो है मेटल जो है आपका स्ट्रेस को क्या करेगा, टॉलरेट कर सकता है, और उसके अंदर जो रहेगा उस बी तक रहेगा जब स्ट्रेस, तो वो जो है उसको स्ट्रेस हटाने के बाद वो अपने शेप में आ जाएगा. ऑल्दो इट इज शोइंग द नॉन लिनियरिटी बिटवीन ए एंड बी, बट वो आ जाएगा. लेकिन जैसे ही बी से थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो इल्ड मतलब अब उसके अंदर एक्सटेंशन हो गया, परमानेंट एक्सटेंशन हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा. इल्ड का मतलब यही हुआ, प्रोड्यूस हो गया उसके अंदर उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ गई, वो बदलेगा नहीं, वो प्लास्टिक रीजन में चला गया.
माइंड कीजिए पॉइंट को। आफ्टर पॉइंट बी द मेटल्स कम्स इनटू द प्लास्टिक जोन, plastic region, and it will not regain its original dimension, right? So that's why it is called the yield point, and corresponding stress is called the yield strength। भाई स्ट्रेस क्या, पावर ही तो है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब वो yield strength हो गया, yield strength ऑफ द मटेरियल। yield strength ऑफ द मटेरियल मतलब उस लिमिट तक मटेरियल के अंदर टॉलरेबिलिटी है, कहां तक, बी तक, कि वो जो है अपने शेप में ओरिजिनल आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। दैट्स वाई we can measure the yield strength of the material to know that up to what extent the material can tolerate the stress and comes into the original dimension when we release the load। So we can measure, we can know different material के लिए अलग अलग yield strength होता है और हम जान सकते हैं, तो उसकी सीमा को हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। इसके बाद जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो फॉर स्मॉल इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेस वी गेट द रैपिड इंक्रीज इन द स्ट्रेन। थोड़ा भी हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो हमें ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है। ठीक है, और वो जो है इस जोन को क्या कहेंगे, प्लास्टिक जोन। ये यहाँ के बाद जो है क्या हो गया, यहाँ के बाद जो है आपका शुरू हो गया, यहाँ से पूरा ये प्लास्टिक जोन में आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि आयोटा केस में ऐसा नहीं था, ये प्लास्टिक जोन में आ गया, समझ रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके जगह पर कोई कोई पॉइंट ले लें, इस बी और डी के बीच में कोई पॉइंट सी ले लें, जो आपके बुक में लिया है सी, एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड डी। सो ठीक है, ले सकते हैं, और वो जो है इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि जो है क्या होगा, वापस नहीं आएगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम नोटेशन बता देते हैं आपके लिए। ईल स्ट्रेंथ को हम जो है, और ईल स्ट्रेंथ को हम सिग्मा वाई से डिनोट करेंगे, क्योंकि हम लोग यंग मॉडुलस पढ़ रहे हैं, यंग्स मॉडुलस। ये सिग्मा स्ट्रेस है, इसलिए सिग्मा, और वाई फॉर यील्ड। तो यील्ड जो है, यील्ड स्ट्रेंथ जो हमारा जो है मटेरियल का होता है, किसका होगा, मेटल का होगा, मेटल का या सॉलिड का, सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड का होगा। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द, दिस पॉइंट बी is also called elastic limit, elastic limit। yield point को elastic limit भी कहते हैं, because if we increase the stress beyond this point B, the body goes into the plastic zone, plastic region, and it breaks the limit of elasticity। That is the point। Now D point is known as the ultimate point, ultimate point, and corresponding stress the stress corresponding to point D is called the ultimate strength, ultimate strength, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा यू। ठीक है, तो हमारा यील्ड हो गया, ये यील्ड स्ट्रेंथ हो गया सिग्मा वाई, एंड सिग्मा यू क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गया। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सॉलिड्स के लिए एक लिमिट है कि भाई उसके बाद जो है अब ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे, थोड़ा सा भी उसमें ज्यादा लोड बढ़ाएंगे, तो अब वो जो है फाइल के टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये ई पॉइंट क्या है, हमारा ई पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट।
तो फ्रैक्चर पॉइंट कैसे मिलेगा? ठीक है, अप टू डी there is no breakage in the material that stress can be tolerated by the metal up to point D. But if we further move, then without even increasing the load, we are trying to reduce the load, but body material is not going to stop. It get extended further. So that is and gets fractured, right? So here you can see, if load is increased further, the stress developed exceeds the yield strength, and strain increases rapidly even for a small change in the stress, and we get the point D. Right? When the load is removed between B and D, the body does not regain and its original dimension, and this is called the. In this case, even the stress is zero, the strain is not zero. तो इसको परमानेंट सेट में पहुंच जाती है. इसको हम लोग जो है यहाँ से यहाँ यदि लाइन खींचे, एक स्ट्रेट लाइन ही खींच देते हैं. हाँ, इसके पैरेलल में ये देखिए. So I want to change this color, but right. So this is the permanent set. This zone is permanent set. What does it mean? परमानेंट सेट हो गया. सो कहाँ से, बी पॉइंट से यदि हम लोग इस पैरेलल जो स्ट्रेट लाइन था उसके पैरेलल जो लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन खींचे, तो वी गेट द रीजन परमानेंट सेट. तो यही कह रहा है कि इफ इन दिस केस आपका पॉइंट डी मिल जाने के बाद सी बी और डी के बीच में यदि स्ट्रेस हटा भी देते हैं तो स्ट्रेन जो है क्या है, जीरो नहीं हो रहा है. स्ट्रेस हटा भी देने से वो जो है वापस बॉडी नहीं आ रही है. इसका जीरो नहीं होने का मतलब यही है ना कि यदि पहले क्या था, अप टू पॉइंट बी जो था, यदि स्ट्रेस हटा देते हैं तो फिर से बॉडी वापस रिगेन कर लेती है अपने डायमेंशन को, मतलब स्ट्रेन जीरो हो जाता है. लेकिन बियॉन्ड पॉइंट बी, इवन यू आर रिमूविंग द स्ट्रेस, their body is not going coming into the its original dimension. That means it is not gaining its original dimension, and that means strain is not being the zero. जीरो हो ही नहीं रहा है. तो क्या वो प्लास्टिक जोन में चला गया, प्लास्टिक रीजन चला गया, वही कह रहा है कि तो इसके तब कहते हैं कि जो मटेरियल क्या है, परमानेंट सेट पोजीशन में चला गया. अब वो परमानेंटली सेट हो गया. मैंने दिखाया था ना फर्स्ट वीडियो में कि जो हमने जो मड टाइप का जो मटेरियल था हमने पुश कर दिया तो हमेशा के लिए पुश हो गया. तो प्लास्टिक था, वो प्लास्टिक बॉडी थी, है ना. प्लास्टिक बॉडी का ये मतलब नहीं होता कि पीवीसी बॉडी ही प्लास्टिक बॉडी होती है, वो तो होती ही है. एनी मड, एनी क्ले इज द प्लास्टिक बॉडी. उसको पुश कर दीजिए, स्ट्रेस लगाइए, तो वो हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएगा. ठीक है. तो परमानेंट सेट हो गया. तो हमारा बी के बाद जो है क्या हो गया, परमानेंटली जो बॉडी प्लास्टिक जोन में चली गई, स्ट्रेन जीरो होने वाला नहीं है. ठीक है. और इस लेवल डी तक, डी को जी पर जितना स्ट्रेस लगेगा उसको अल्टीमेट स्ट्रेन कहेंगे. और इसके बाद जो है अब वो बॉडी रुकने से नहीं रुकेगी, वो जो है परमानेंटली क्या एक्सटेंड होती रहेगी और ब्रेक कर जाएगी. तो उसी को देखते हैं. तो ठीक है. बियॉन्ड दिस पॉइंट डी, एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय ए रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स. अब थोड़ा सा भी कम भी फोर्स लगाएंगे तो फटाफट जो है स्ट्रेन मिलेगा और क्या होगा, फ्रैक्चर आपका टाइट पॉइंट, और ई पर आकर के वो बॉडी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी. अब कुछ पॉइंट्स है डी और ई के बारे में बात करते हैं. डी और ई के बारे में, जैसे हमने डी से ई के बीच में ये ग्राफ खींचते हैं, ये डी और ई. तो ये डी पॉइंट क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट. और ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट. ये तो हम लोग समझ चुके हैं. लेकिन यदि डी और ई वेरी क्लोज हो, मतलब इफ डी ई लेंथ इज वेरी स्मॉल, इज स्मॉल,
or you can say D and E are close enough, then the metal is called brittle. ब्रिटल मतलब क्या हुआ? मतलब डी और ई वेरी क्लोज का मतलब क्या, जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ खत्म हुआ वैसे ही वो ब्रेक कर गया, मतलब वो फटाक से टूटने वाला चीज हो गया, है ना? ब्रिटल का मतलब देखिए, कुछ भी जल्दी ऐसे से फट से टूट जाए तो उसके अंदर जो है इलास्टिसिटी खत्म है, उसके बाद थोड़ी भी उसके अंदर जो है वो क्या नाम है, फैलने का ताकत नहीं है, फैलने वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ब्रिटल होता है, ठीक है ना? तो कुछ मेटल जो है, जैसे आप आयरन को थोड़ा, आयरन तो इलास्टिक है कुछ लिमिट तक, ठीक है, लेकिन जैसे ही एक लिमिट के बाद वो जो है ब्रेक कर जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड को पीट पीट करके आप फाइल बना लीजिए, जल्दी वो क्या होता है, टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता है। दैट्स वाई इन दैट गोल्ड केस इट इज डक्टाइल। सो first point is, if D and E is small, then we call the brittle. And second point is, if D E is large, then the metal is called ductile. Metal is called ductile. ठीक है? तो इस केस में क्या हुआ, गोल्ड हो गया और कुछ लिमिट तक कॉपर भी है, तो हम लोग देखेंगे, यही सब पढ़ेंगे इसके। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग ये टेबल को समझते हैं। चलो भाई ऊपर। हाँ, so see, now we discuss this table 9.1, Young's moduli and yield strength of the material. You can see if this is the density column, this is the density column, right? And this the Young's modulus column, and this is the ultimate strength column, and this is the yield strength. अब देखिए यहाँ पर डेटा जो है क्या है, खत्म है, ये देख लीजिए, कुछ नहीं है, yield स्ट्रेंथ नीचे वाले ग्लास से लेकर के पॉलिस्टीरीन तक कोई भी yield स्ट्रेंथ नहीं है। yield स्ट्रेंथ याद है ना, पॉइंट बी देता है जिस पर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिलता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं, हमने समझा का क्या, स्टील जो है क्या है, मोर इलास्टिक देन व्हाट? अभी देखिए आपको, स्टील मोर इलास्टिक देन कॉपर, कॉपर मोर इलास्टिक देन ब्रॉस एंड देन एल्युमिनियम। ये चीज हम लोग डेटा समझ लिए थे। अब देखिए हम फिर से इसको लिख लेते हैं, स्टील more elastic than copper, than brass, than aluminium, ये ठीक है। अब आप यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ देख लीजिए, आप सबसे ज्यादा अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसमें किसका है, 400 एंड 400, किसका किसका है, कॉपर एंड स्टील का। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है कॉपर और स्टील का सेम है। अल्टीमेट मतलब अब उसके बाद जो क्या होगा, जो है मटेरियल जो है ब्रिटल हो जाए, वो क्या करेंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो दोनों के लिए जो है, जैसा कि बताया मैंने, दोनों के लिए स्ट्रेंथ भी जो है, देखिए इसमें जो है स्ट्रेंथ भी, कॉपर और स्टील का स्ट्रेंथ भी जो है ठीक ठाक है दोनों का। लेकिन हमारा ये सॉरी, ये वाला इन स्ट्रेंथ हमारा कॉपर का ये है और स्टील का 250 है। तो हाँ, इन स्ट्रेंथ के केस में देखें, सिग्मा वाई फॉर व्हाट, steel is greater than sigma y for copper। देखिए ये yield स्ट्रेंथ इसके लिए, स्टील के लिए थोड़ा ज्यादा है, कितना है, ज्यादा अंतर नहीं है, 200 और 250 का अंतर है। तो हमारा ये स्टील का 250 है और ये 200 है, ठीक है। मतलब आप जो है 250 न्यूटन लगाएंगे तो ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगी स्टील के केस में, और कॉपर केस में 200 न्यूटन पे ही आ जाएगी, बस इतनी सी बात है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ था ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है,
अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है कॉपर और स्टील का सेम होता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए जो है दोनों क्या होते हैं, फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, अलग नहीं है। तो इसलिए इनका बहुत ही दोनों का इक्वल ही हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या डेटा आ गया, ये आप ये देखिए, ईल स्ट्रेंथ जो है ग्लास के लिए, कंक्रीट के लिए, वुड के लिए, बोन के लिए, पॉलिस्टर के लिए कुछ नहीं है, जीरो है, मतलब डेटा अनअवेलेबल है। मतलब इसका मतलब क्या है, ग्लास का क्या है जी, ये तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे, ग्लास तुरंत क्रैक हो जाती है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है, तुरंत टूट जाती है। वैसे ही आपका वुड भी वैसे ही है, बोन भी, बोन कोई देखिए टूट जाती है तो आसानी से, तनकी से थोड़ा सा गिर गया फर्श पर गई, क्रैक कर गई, तो उसमें स्ट्रेंथ कहाँ है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए ये सब मटेरियल जो है, ये जो ग्लास, कंक्रीट, वुड, ये जो है, ये नोट कर लीजिए, ये बहुत अजीब सा डेटा है, एकदम अलग है, ऑड मैन आउट है, इसलिए इनको नोट कर लीजिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। टेबल से ये सारे डेटा आप निकल के आ रहे हैं, और इनको इसलिए ऐसे ही टेबल स्टडी करते हैं, ऐसे ही डेटा आ रहे हैं और आपको इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए है, स्टील और कॉपर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम है, जो कि एल्युमिनियम से ज्यादा है, लेकिन ईल स्ट्रेंथ जो है मामूली सा स्टील का कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। और एल्युमिनियम का यदि ईल स्ट्रेंथ देखें तो एल्युमिनियम का क्या है, कम, यहाँ एल्युमिनियम का है, ठीक है, ऐसे आप समझ गए। लेकिन हमारा ईल स्ट्रेंथ फॉर दिस ग्लास, कंक्रीट, वुड, बोन, पॉलिस्टीन, ये क्या है, जीरो है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है, लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, तो हम लोग जो है अब जो है अगले में न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस पर सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होने से आप जो है कमेंट में लिखिए, हमें व्हाट्सएप चैट कीजिए, आज के आज ही पूछ लीजिए, ताकि आपका नॉलेज फ्रेश रहता है, डाउट भी फ्रेश रहता है, तो पूछ लिया कीजिए, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग हीरा कॉस्मोस से को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो शेड्यूल करूंगा आप लोग को पता चल जाएगा। हाँ, आप लोगों को पूछने का जरूरत नहीं है सर कि हमें वीडियो कब मिलेगा, वो शेड्यूल करते ही पता चल जाएगा। हीरा कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा फटाक से आपको, जैसे ही हम वीडियो वीडियो शेड्यूल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।